लाइक ये जेंडर, दोनों जेंडर इसको कैसे लेते हैं? It's for men who are cheating. It's like a pattern, not like a fact, but it's like a pattern that I have seen. Ki they go out of curiosity and or to satisfy their ego ठीक है. with respect to having a sexual relationship, or there is a fear of intimacy, and women go out of the relationship because they lack the sexual intimacy, right? Or they feel emotionally insecure in the relationship. They feel lonely in the relationship, है ना? तो ये हमारे इंटेंट एज अ वुमन और मैन थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं. तो हम जिस तरीके से लेते हैं सामने वाले का, men, I feel both, both are going through the traumatic response, but उनका way of exhibiting or the how the symptoms are manifesting is little different, है ना? How they deal, क्योंकि most of the time men don't feel comfortable about expressing their emotional needs. Okay, they feel that it's not required. चल रहा है ना, कोई बात नहीं है. Women are more detailed and meticulous about it. तो अलाइनमेंट कहीं बिगड़ जाता है. तो अगर द वुमेन टेक्स इट मोर, मतलब दोनों में ये हो जाता है कि मैं अपने ऊपर ले लूँ, शायद मेरी ही गलती है. इसमें कहीं डिफरेंस नहीं है. दोनों ये कोशिश करते हैं कभी बहुत सारे टाइम पे कि मेरी गलती हो सकती है, बट हाउ दे आर एड्रेसिंग द एंटायर पार्ट इज लिटिल डिफिकल्ट. जैसे फॉर वुमेन इट मे बी द intensity is little higher and that can get prolonged, कि वो बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, क्यूरियस क्वेश्चंस पूछेंगी कि क्या उसमें इतना बेटर दिखा, वो मुझसे बेटर है कि नहीं है. Men are a little less on those inquisitive questions. ये डिफरेंस थोड़ा सा हो जाता है उनमें. Have you ever got like people who come to you saying कि they are at this stage, जैसे कि हमने पहले भी बात की, बहुत सारे ऐसे जन हैं जो अपने करंट पार्टनर के साथ बहुत खुश है, बट दे आर अट्रैक्टेड टू अनदर पर्सन इन देयर लाइफ. तो डू दे कम टू यू सेइंग कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है एंड आई डोंट वांट दिस टू हैपन? जब वो आपके पास आते हैं तो आप उसको कैसे एड्रेस करते हो? Like I said, because it's more about the inner conflict, your attachment styles, and how you feel about yourself, we address that first. तो आप ये सब चीजें पूछते हो उनको कि पता लगाने के लिए कि कहाँ पे क्या मिसिंग है? We go back in the history. अच्छा. वो क्योंकि वो एक्ट खाली अभी है इन द प्रेजेंट सिनेरियो, है ना? उसके पहले बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी जो इस सिचुएशन पे लेके आई होंगी उस इंसान को. तो ऐसे लोग आते हैं कि आई हैव हैड दिस इशू that I go out of the marriage, but I really want to change it. Please help me out. And they are really in lot of distress. तो किसी को, कोई आउटसाइडर को लगेगा, कोई एक लेमैन को लगेगा कि ये तो ड्रामा है. उसको तो पता होता ना कि कर रहा है खराब, तो क्यों है? तो if this person is making a choice to do this, whether a female or a male, right? So they should be able to stop it, but sometimes it becomes little difficult for them to put a boundary to that. So when these kind of people come to you who really want to change, सबसे common pattern इसमें आपने क्या देखा है कि what is the reason, core reason? There's a lot of fear of intimacy, or fear of expressing their emotional needs, not being understood, right? And insecure attachment styles. How to be understood? I mean, every single person thinks कि मेरे को तो कोई समझता नहीं है. How to be understood? पर ये क्योंकि हम ये सारी चीज़ें ना दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट कर देते हैं कि उसने ऐसा रिस्पॉन्स देना चाहिए. We are already going with the preconceived notion that if I'm talking to you, you should be responding in that manner. The moment you don't respond, I get disappointed. That is unhealthy. I should not go ahead with a preconceived notion to have a conversation that I am expecting this kind of a response. I should go with an openness. ठीक है. Right? That I am giving. The main motto of any relationship is to agree to disagree. You don't have to get convinced with the idea of another person, but with the belief understand. system. Exactly. समझो तो सही. Yes, I may not follow what you're saying, but I'm understanding what you're saying. I'm giving you my active listening ears so that you feel that I'm hearing you. I may not agree with it. तो उससे भी कितना फर्क पड़ता है? Because all they try to do is to convince each other. मैं सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत. तो वो ब्लेम गेम बन जाता है, वो ऑल्टरकेशन बन जाता है, वो कॉन्वर्सेशन रहता ही नहीं है. That is why they feel that they are not understood. Because they are expecting, they go with an expectation to have a certain kind of response. That is the problem. Okay, this is really good. एक बेसिक तरीका कि अंडरस्टैंडिंग मतलब ये नहीं होता है कि
पूरा आपको उस पे अग्री करना है, Exactly. सुनो तो सही. Exactly. एंड या women have lot of complaints specifically इसके लिए कि कोई सुन ही नहीं रहा. I hear it a lot. Okay, let's say doesn't matter if your partner is faithful or not. आपकी relationship कैसी रही है, कैसी नहीं रही है, सब कुछ एक जगह. But आप एक relationship में हो. What are the key pointers to build a healthy relationship? There has to be genuinity. Hmm. There has to be respect, mutual respect for each other. There has to be honesty.